Class 9 Science Chapter 1 Exploration Entering the World of Secondary Science। ये एनसीईआरटी बुक का न्यू चैप्टर साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का। इसमें आपको एमसीक्यूज के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर एंड आपके लॉन्ग आंसर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाई डज साइंस यूज मॉडल्स? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। टू मेक लर्निंग डिफिकल्ट, टू कॉपी नेचर एग्जैक्टली, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, टू अवॉइड एक्सपेरिमेंट्स। So your answer is to simplify complex systems. Question number 2. In the cricket ball example, which factor was considered important? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आंसर्स हो गए स्पीड एंड डायरेक्शंस ऑफ द बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट डज द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइज इन द टेक्स्ट बुक? यहाँ भी आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, डायरेक्शन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, स्पीड, मेजरमेंट। तो आपका आंसर होगा केयरफुल ऑब्जर्वेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो विच लैंग्वेज हेल्प्स साइंस एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स क्लियरली? आपके सामने ऑप्शंस हैं आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक। तो आपके आंसर्स हैं मैथमेटिक्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द सिंबल C फॉर स्पीड ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम? देखिए ये एक लैटिन वर्ड है, सेलेरेटास वर्ड से आया है, ओके, जिसका अर्थ होता है स्पीड। क्वेश्चन नंबर 6, अ साइंटिफिक थ्योरी इज? साइंटिफिक थ्योरी क्या है? तो एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक प्रिडिक्शन? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है आपके, इसमें आंसर होंगे प्रेडिक्टिंग रेनफॉल यूजिंग ह्यूमिडिटी डेटा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडर्ड यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे? ऑप्शंस हैं क्रिएट कंफ्यूजन, हेल्प ओनली साइंटिस्ट, इंश्योर फेयरनेस एंड कंपैरिजन, डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें ऑप्शन नंबर सी इंश्योर फेयरनेस एंड कंपैरिजन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइंस improves when? Questions are avoided, ideas are never changed, predictions match observations, और beliefs are blindly accepted। तो ऑप्शन नंबर सी predictions match observation। क्वेश्चन नंबर 10, which branches of science helped in understanding mask during COVID-19? So your answer is physics, chemistry, biology and mathematics। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो assertions and reasons बेस्ड हैं। इसमें assertion क्या है, कथन क्या कहता है? मॉडल्स इन साइंस इग्नोर सम डिटेल्स इंटेंशनली। रीजन कहता है इग्नोरिंग अननेसेसरी डिटेल्स हेल्प सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस पर कथन ये है कि साइंटिफिक थ्योरीज कैन चेंज विथ न्यू एविडेंस। बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है साइंस इज बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ये सेम आंसर होंगे क्या? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्वेश्चन, assertion A, weather forecast are always 100% correct। रीजन है weather depends on many changing factor। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो फॉल्स है और लास्ट स्टेटमेंट जो है रीजन वो ट्रू है। अब वेरी शॉर्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ साइंटिफिक मॉडल? आंसर है a scientific model is a simplified representation of a real system used to study important features। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are standard units important? स्टैंडर्ड यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ऐसा यूनिट्स
Standard units ensure fairness, accuracy, and easy comparison of measurements worldwide. Question number third, what is meant by scientific prediction? So answer is scientific prediction is a reasoned expectations based on evidence, laws, and theories. Question number four, name any two scientific quantities and their symbols. तो मास के लिए स्मॉल एम एंड वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी का यूज करते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस? मैथमेटिक्स हेल्प्स express relationship clearly and allows careful reasoning. Next question short answer based है. Why do scientists ignore some details while making models? Scientists ignore unnecessary details to simplify complex systems and focus only on important factors related to the problem. इसको आप ऐसे समझिए जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल से घर जा रहा है या घर से स्कूल जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है? स्पीड मायने रखती है, डिस्टेंस मायने रखती है, या साइकिल के कलर कैसे हैं, वो यूनिफॉर्म कैसा पहना है, ये मायने रखती हैं. तो साइंटिस्ट लोग डिस्टेंस और उसमें कितना फोर्स लगा रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है. ओके. डिफरेंशिएट बिटवीन अ लॉ एंड अ थ्योरी. तो लॉ जो है, अ लॉ डिस्क्राइब्स पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन नेचर एंड थ्योरी explains why those patterns occur using evidence. Question number third, why can scientific thinking improve predictions? साइंटिफिक थिंकिंग यूजेज एविडेंस क्योंकि साइंटिस्ट एविडेंस यूज करते हैं, मेजरमेंट्स एंड रीजनिंग इंस्टेड ऑफ गेस वर्क, मेकिंग प्रिडिक्शंस मोर रिलायबल. इसमें अगर आपको कोई पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो आपका ऑलरेडी बना दिया जा चुका है जिसमें आपको ये सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, गेस वर्क क्या है, ये सब के बारे में. वाई इज एस्टिमेशन इम्पोर्टेंट इन साइंस? Estimation helps check whether answers are reasonable, detect errors, and build scientific understanding. Next question, why are different branches of science connected? So answer is real world problems involve ideas from many branches of science working together. Long answer question, explain how science uses models with the example of cricket shot. Answer is science uses models to simplify complex situations in the cricket shot example. Only important factors such as mass, speed, and directions of the ball are considered. Less important details like color of the ball, brand of the bat, or grass on the field are ignored. This helps scientists study motion more easily and accurately. अभी जैसे हम बताए कि अगर कोई क्रिकेट शॉट में है तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मास, स्पीड और डायरेक्शंस. कलर ऑफ द बॉल या ब्रांड ऑफ द बैट या ग्रास कैसा है फील्ड का, ये सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है. एक्सप्लेन व्हाई साइंस इज कंसिडर्ड सेल्फ करेक्टिंग. Science is self-correcting because scientific ideas are always tested against evidence. When predictions fail or new observations are made, scientists re-examine theories and improve them. No scientific theory is considered final. This openness to corrections makes science reliable. Describe how scientific thinking is useful in daily life. Scientific thinking helps people make decisions based on evidence and reasoning. It improves problem solving, helps evaluate information critically, and avoids superstitions or blind belief. It is useful in understanding technology, health, environment, and daily activities. Next question, what do the magnifying glass and compass symbolize in this science textbook? Answer is the magnifying glass symbolizes careful observation, helping us notice patterns and pay attention to small details. The compass reminds us that exploration needs direction, such as choosing the right models and
asking the right question. Next question. Why do scientists use models to study the natural world? The natural world is very complex, so scientists use models as simplified ways to look at a real system. By making assumptions and deliberately ignoring certain details, they can focus only on what is most important to answer a specific question. How do how did Meghnad Saha use a simplified model to study stars? Meghnad Saha ने क्या यूज किया था? So instead of trying to model every single atom or movement inside a star, he simply treated the star's matter as a hot gas by focusing only on temperature, pressure, and ion formation. He successfully explained how the color of a star is connected to its temperature. Why is it important to use standard units, SI units, in science and daily life? Standard units are based on international agreement rather than local objects or opinions. Using standard units everywhere ensures fairness in daily trade, allows global scientific results to be compared, and helps avoid dangerous errors and conversions. ये क्वेश्चन का आंसर एक और हम दिए हैं जो कि शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लेंदी है बट ये ज़्यादा इफेक्टिव है. ओके. What is the difference between a scientific law and a scientific theory? A scientific law describes a regular pattern observed in nature, such as Newton's law of motion. A theory goes a step further and provides an explanation for why those patterns occur based on carefully tested evidence, such as the atomic theory. Question number 9. Are scientific predictions just random guesses? Answer: no, scientific predictions are not guesses. They are reasoned expectations based on evidence, established laws, and careful thinking. Question number 10. What happens when a scientific prediction does not match observation? Answer is: it is not seen as a weakness. Instead, it drives further exploration. Scientists re-examine their assumptions, models, or their ideas. Next question. Why is making rough estimates a useful habit in science? Answer is: exact values are not always necessary. Making a rough estimate helps us quickly check if a result is reasonable or completely impossible, which builds institutions, helps detect errors, and develops confidence in logical thinking. Next question. Are branches of science like physics, chemistry, and biology completely separate from each other? तो आंसर होगा नहीं. These boundaries are made by humans just to organize knowledge. Real world problems such as understanding how a protective mask works require concepts from multiple branches of science working together. कुछ क्वेश्चन केस बेस्ड भी हैं. Case study 1. A passenger aircraft once ran out of fuel because the ground crew used pounds instead of kilograms while calculating fuel requirements. The question है what mix was made? So answer is the wrong unit conversion was used. Why are SI units important? Then SI units ensure accuracy and avoid confusion. और next question है what lesson does the incident teach? So standard measurement are essential for safety and scientific work. Case study 2. Versa predicted a rainfall by observing dark clouds. हम लोग भी करते हैं. तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट एडिशनल साइंटिफिक डेटा could improve her prediction. तो ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, टेम्परेचर एंड पास्ट वेदर पैटर्न्स पे बेस्ड हैं. व्हाई आर मेजरेबल क्वांटिटीज important? They provide reliable evidence. Is prediction the same as guesswork? No. Prediction is based on evidence and reasoning. कुछ क्वेश्चन competency based questions हैं. A student says food becomes poisonous during an eclipse.
How would you scientifically test this claim? We should check whether any physical, chemical, or biological changes occur in food during an eclipse. Since an eclipse is only a shadow effect, there is no scientific evidence that food becomes harmful. Next question: why is approximate reasoning useful in everyday life? Then the answer is approximate reasoning helps make quick decisions, check whether answers are sensible, and solve practical problems without exact calculations. कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं हॉट्स. Why is science called a human activity? Because science develops through curiosity, creativity, experiments, collaborations, and sharing ideas among people across generation. Next, how can scientific thinking help in checking viral social media claims? So scientific thinking asks for evidence, logical explanations, and testing before accepting claims as true. कुछ fill the blanks भी हैं. Scientific science uses this to simplify complex system. And answer is models. The speed of light is represented by the symbol. तो small c इसका मतलब होता है celeritas, जिसका मतलब होता है swiftness और speed. ये एक लैटिन वर्ड है celeritas. A scientific theory is based on careful dash and evidence, testing and evidence. Standard units ensure dash in trade and measurement. The answer is fairness. Science values careful dash more than exact calculation. The answer होगा reasoning. कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी हैं. साइंटिफिक थ्योरीज आर ओनली गेसेस. बिल्कुल नहीं. मैथमेटिक्स इज a लैंग्वेज ऑफ साइंस. Yes. Weather forecast can never be wrong. False. Science and mathematics are completely separate. False. And the last question, estimation is useful in science. तो आंसर होगा ट्रू.